Assalamu alaikum viewers. Today we are going to talk about two very important topics. One, both of them will answer this question. Why do science lessons ignite curiosity while others leave students disengaged? The answer often lies not on in the textbook but in how teachers connect the content with pedagogy. This is what we call pedagogical content knowledge or PCK. And today we will see how it transforms science classrooms in Pakistan. Welcome to Education AI Parixes, where we explore innovative teaching strategies and digital learning. In this video, we will unpack PCK and then walk through a real classroom example, teaching the periodic table in real situation and the way it sparks critical thinking and real world connections. First, we will define what is pedagogical content knowledge. Pedagogical content knowledge is a combination of content knowledge that is found in textbooks which we teach in our classrooms and students learn from those textbooks. This is one component of PCK. The other component is the pedagogical knowledge, that is the knowledge of the teacher which he uses to adopt his teaching methods and apply those teaching methods and teaching strategies in combination with the content knowledge. This concept was presented by Lee Schulman in 1986, and it has contributed a lot for the improvement of science education throughout the world. This is a very essential concept in teaching and learning and improving science education. The concept of pedagogical content knowledge. Why it is important, we will discuss right now. Pedagogical content knowledge bridges the gap between content and pedagogy, and the subject matter knowledge and teaching methods are combined in this concept. The, the pedagogical content knowledge or PCK also helpful in addressing students' misconception while they are learning. It also activates the prior knowledge. This pedagogical content knowledge is relevant because it involves knowledge of the classroom and the school setting. In our context, this knowledge of combining the context in which the students are learning and in which the teachers are teaching is also very important. Pedagogical content knowledge combines the content in the textbook and also knowledge of the teachers about their teaching methods and the school situation and the availability of resources. Pedagogical content knowledge, it is important also because it helps the teacher to select appropriate instructional strategies in view of the level of the students, and it also takes into account where the student is and how it can apply the knowledge they are gaining in their actual life, because generally the aim of the student is to pass the test, but later in life when they graduate from the school or from the institution or from the university, they need to apply whatever they have learned in their schooling and in their education process. They have to apply that knowledge to create new knowledge and new ideas and new inventions, so that PCK in that sense is also very important. PCK also involves the development of appropriate and authentic assessment techniques, and which teachers use while they are teaching in the class, and they are also assessing whether students are learning and what they are learning and whether they are able to
apply that knowledge in this situation, in their real life situations. अब हम पीडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज के कॉन्सेप्ट को एक एक्चुअल लेसन, जो कि पीरियाडिक टेबल बड़ा अहम एक मौजू होता है जो 9th 10th की ग्रेड में, उस पर अप्लाई करके एक लेसन प्लान को कैसे टीचर्स डेवलप कर सकते हैं और कैसे पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पीसी के का जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्टूडेंट्स को एंगेज करना और उनके प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करना सबसे अहम स्टेप होता है। इसके डिस्कशन हम और वीडियो में कर चुके हैं, और के एक्टिवेशन ऑफ प्रायर नॉलेज कैसे होती है। उसके लिए मसलन अगर हमने पीरियोडिक टेबल का सबक पढ़ाना है तो कैसे प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए आप जो आम इस्तेमाल के एलिमेंट्स हैं या केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल साल्ट है, एल्युमिनियम फॉयल है, पेंसिल का लेड है, तो इन चीज़ों को दिखा सकते हैं बच्चों को, चाहे वो 9th 10th क्लास के भी हों। उनकी आम जिंदगी में ये कम उनके लिए, जब हम उसको रिलेट करेंगे पीरियोडिक टेबल से, तो ये चीज़ें दिखाने से उनका जो प्रायर नॉलेज है वो एक्टिवेट होता है। इसी तरह हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, विच आर द एलिमेंट्स इन दीज आइटम्स and how they are related to their daily lives. For example, why aluminium foils are used. तो इस तरह के क्वेश्चन करने से जो प्रायर नॉलेज की एक्टिवेशन का स्टेप है वो होता है। तो टीचर ने कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने मेथड के ज़रिए पीडागॉजी को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसलिए ये जो पीसीके का कॉन्सेप्ट है, इससे पहला स्टेप इंस्ट्रक्शन का ये होता है कि स्टूडेंट को एंगेज किया जाए और क्लासरूम के लिए उनका प्रायर नॉलेज एक्टिवेट किया जाए। दूसरा जो स्टेप है वो एक्सप्लोरेशन का है। इसमें टीचर जो है वो एक्चुअल जो कंटेंट है जो कि किताब में लिखा होगा किसी चैप्टर में, यानी जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम ग्रुप्स की डेफिनेशन और मेटल की डेफिनेशन, नॉन मेटल की डेफिनेशन, एटम का जो स्ट्रक्चर है, जैसे उसके बॉन्ड्स हैं, जैसे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स किन शेल्स में घूमते हैं, क्या नंबर होता है उसका, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये हम स्टूडेंट को देना शुरू करेंगे। और उससे मुतालिक भी हम उसको रिलेट करेंगे कि जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो लाइक डेली लाइफ से लाइक एन अनियन है, द लेयर्स ऑफ द अनियन। जो प्याज के छिलके हैं, वो प्याज की जो सतहें हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को उससे सिमिलैरिटी करके तो रियल लाइफ से जो कंटेंट है उसको रिलेट करते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कंटेंट ही पढ़ाते रहें और बच्चे कंटेंट ही को, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरे लेवल पे हम थ्रू एक्टिव लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग, हम तीसरे स्टेप में बच्चों को जो कंटेंट है उसको रिलेट करेंगे और वो पेश करेंगे। फॉर एग्जांपल, टीचर्स जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में अगर अवेलेबल है या क्लासरूम में, उस तो वो वहाँ शो करे, और उसके फिर जो पीरियड्स हैं और उसके जो ग्रुप्स हैं, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसके बारे में बच्चों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के ज़रिए अपना नॉलेज वो ट्रांसफ़र करेगा। और इसमें भी वो फॉर एग्जांपल ह्यूमन पीरियोडिक टेबल बनाए। स्टूडेंट्स को अगर वो साथ साथ थिंक करें कि अपने आप को वो 2 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में अरेंज कर ले। फॉर एग्जांपल अगर 30 स्टूडेंट हैं तो वो 6-6, 7-7 स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बना सकते हैं, और सिमिलर एज के, या एज के हवाले से, या अपने अचीवमेंट के हवाले से, या अपने डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल के हवाले से वो अपने आप को ग्रुप्स में अगर अरेंज करें, तो ये जो क्लास थी एक पीरियोडिक टेबल की तरह अरेंज कर ली, तो इसको हम कहेंगे कि ये ह्यूमन पीरियोडिक टेबल है। तो इस तरह से
जो पीडागोजी है और कंटेंट है उसको वो कंबाइन कर रहा है टीचर। जिस सेक्शन को हम पढ़ रहे थे वो उसका ताल्लुक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से है, जो कि टीचर जब फॉर एग्जांपल जब वो पीरियोडिक टेबल के कंटेंट को पढ़ा रहा होता है तो डायरेक्ट कैसे उसको लाइफ के साथ इंटीग्रेट करता है। उसी सिलसिले में वो उनसे ये भी पूछ सकता है कि पीरियोडिक टेबल को सामने रखते हुए उनकी जो ग्रुप्स हैं और जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं उसमें क्या ट्रेंड पाया जा रहा है। मसलन एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से एलिमेंट्स, एक किस्म के एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए हैं, और एटॉमिक रेडियस के हवाले से भी उनको बताया जा सकता है कि टीचर कैन डिलीवर द कंटेंट in relation to in relating it to the human life also. So this is very important part of a presentation by the teacher. एलेबोरेट करने के लिए भी टीचर इन्हीं इन्हीं जो एलिमेंट्स हैं जो कि लाइफ में आमतौर पर स्टूडेंट्स को होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करवा सकता है। फॉर एग्जांपल लिथियम है, तो लिथियम चूँकि मॉडर्न टाइप की बैटरीज में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो हम उसको रिलेट करेंगे और स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में उसको आइडेंटिफाई करें। लिथियम एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जो एटॉमिक वेट है, जो उसका एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक मास है, इस कंटेंट को टीचर विद द इन्वॉल्वमेंट उनके साथ विद रेफरेंस टू use of lithium in batteries and in other silicon is used in different kinds of electronics. Iron is used in construction, in houses, in buildings. So these elements can be identified, and students can participate and locate where these elements which are commonly used in life, they are found in the periodic table, and then the teacher and the students, they learn the important concepts of atomic mass, atomic number, atomic weight, and all the other characteristics, whether it is a metal or whether it is non-metal or it is a metalloid. And this is how the elements of the periodic table are organized in the product. So this is the content which the students need to understand and need to know and need to relate to the content. Teachers are supposed to give the content in the textbook in the form which is related to their lives and where they are used practically in their lives. Towards the end of the lesson, construction of authentic assessment tests, the end of lesson questions, and written and oral discussion on the topic they have student is also very important part of the pedagogy. And the PCK, or the pedagogical content knowledge, which is the combination of content and methodology। अभी हमने आपसे डिस्कशन की है कि किस तरह से पीसीके के कॉन्सेप्ट को टीचर्स यूज़ कर सकते हैं अपने एक एक्चुअल लेसन प्लान, जिसका टाइटल जो था वो पीरियोडिक टेबल था। उसके 5 स्टेप्स को भी अभी हमने डिस्क्राइब किया है, जो कि एंगेजिंग का स्टेप था, एक्सप्लोरिंग का स्टेप था, इसी तरह एक्सप्लेनिंग एंड प्रेजेंटेशन का था, जो तीसरा जो एलेबोरेशन और एक्सप्लेनेशन का स्टेप था, और जो लास्ट स्टेप होता है जो टीचिंग का पीडागोजिकल जो लास्ट स्टेप है वो असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग होता है। तो ये ब्रीफली 5 स्टेप्स हैं। एंगेज द स्टूडेंट्स, एक्सप्लोर द कंटेंट, explain the content, elaborate with examples, and then evaluate the learning of the students. This template or this framework is the combination of a content knowledge on a topic of periodic table and the PCK framework. And now we move on to how this PCK bridges the gap between science content and student understanding. This lesson has shown us how evidence based strategies can make
abstract concepts. The periodic table is very abstract concept, and how we can make it real and relate to the understanding of the student. We have talked about this and shown how a lesson can be developed on the content, and combining the pedagogical skills of the teacher, they can convert an abstract concept into a very relevant and related and real life situation. The abstract concepts of the concept with with the idea and the framework of PCK, which is a pedagogical content knowledge, and which is important, very important concept in educational terminology. So we can integrate those, and we can use that to improve classroom instruction and educational, the quality of education in Pakistan. So uh, I urge all teachers that they can start small, and they can adopt one lesson and plan one lesson or deliver one lesson on a topic, properly prepare it, plan it, prepare it, deliver it, record it, and then present, take comments from the students for the next time, and so that there is a continuous process of improvement. So for teachers, it is very important that they take small steps, one lesson, say in 1 month, and teach the regular as you are used to teaching the content, but for improvement purposes, for bringing about positive changes in the school, uh, in the learning of the students, you can take small steps. So I had suggested a very small framework which can be applied in the real school life. So take a small step and adapt one lesson with PCK strategies. Together, we can move from rote memorization to meaningful science learning in Pakistani classrooms. Thank you very much for watching Educational AI Parixes. Don't forget to like, share, and subscribe for more insights on education and teaching innovation. Thank you very much.